So now we discuss the second part of this unit number 5. In the first part, we have discussed about the corporate restructuring, what are the different methods, mergers, acquisition, takeovers, etc., motives behind mergers, all those things. Now the second part is regarding the approaches for valuation or corporate valuation. Approaches for valuation or corporate valuation, this is the second topic. So now we discuss on this valuation technique. See here, owners of corporate securities will hold management responsible if they fail to enhance the value of their securities. जब investors, owners of corporate securities are nothing but the shareholders. Shareholders will make management responsible if they fail to enhance the value of the security. Hence, senior managers must understand that how to measure, how to value a company. Company का value कैसा मालूम करेंगे? What are the methods through which we can be able to find out the value of the company? So, after liberalization, after 1990s, number of mergers are taking place, number of acquisitions are taking place, restructuring is taking place. So, in these circumstances, there is a need for calculating the value of a company, corporate valuation. तो ये corporate valuation का term बहुत ज़्यादा important हो गया है ये liberalization के बाद, क्योंकि companies को value करना time to time बहुत ज़रूरी हो गया है, because owners of the securities require what is the value, and secondly, whenever there is a proposal to merge the companies, there is a need to calculate the value. So, what do you mean by fair value of a company? The fair market value of a security or a company is clearly defined by Internal Revenue Service of USA. One department is there, Internal Revenue Service of the US. This says what is the meaning of the term fair market value. It is defined at which the price at which the property would change hands. Fair market price is a price at which the property will change the hands between a willing seller to the willing buyer, under which the willing seller will not have any compulsion to sell and the willing buyer will not have any compulsion to buy, and both will have the full relevant information about the relevant facts. जब दो आदमी है, buyer और seller, buyer he is willing to buy and seller he is willing to sell, and both are under no compulsion to buy or sell, and both the parties will have complete information, relevant facts, information, then the price at which the property will pass from one person to another person, that is called the fair market price. Now, the two most important approaches to find out the value of a company are comparable company approach and discounted cash flow approach. Many methods are there, many approaches are there, but from our syllabus point of view, two approaches are included. You must have the knowledge about two approaches how to calculate the value of a corporation, value of a company. The first one is comparable company approach. According to this comparable company approach, it's a common sense economic view that two similar assets should fetch the same price. दो सिमिलर assets है तो दोनों का प्राइस एक ही होना चाहिए, ये common sense approach है. So two assets, if two similar or same assets are there, both the assets will fetch the same price. Actually, this comparable company approach is the term which is applied normally in real estate. For example, in real estate, one apartment of 3000 SFT, it was sold for 7.5 million. Suppose 7.5 million one apartment was sold. Then in the same apartment, in the same complex, if another apartment is there of the same size, then we can say that other apartment was sold for 7.5 million. So the value of this apartment is also 7.5 million. Because both are comparable. दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स में हैं, एक ही साइज के अपार्टमेंट्स हैं, तो कह सकते हैं कि एक अपार्टमेंट अगर 7.5 में बिका है तो दूसरा अपार्टमेंट भी 7.5 में बिकेगा. So easily we can ascertain the value by comparing one apartment with another apartment. Similarly, one company with another company, if both are same or almost similar, then we can say the price fetched by one company will be equal to the price of the other company. But
this comparable company will be difficult if the size of the two companies are different. Just like if the size of two apartments are different. For example, one apartment is 3000 SFT. It was sold for 7.5 million. Suppose another apartment is 2000 SFT. Can we say that this 2000 SFT apartment will also be sold at 7.5 million? No, because that was 3000 SFT. This is 2000 SFT. Apartments are not comparable. In that case, how to calculate the value? We calculate what is the per SFT, per square foot. What is the price? The apartment which was sold, 3000 SFT apartment was sold for 7.5 million. We calculate what is the price per SFT, and that price per SFT will be applied to this 2000 SFT apartment in order to find out the value. So this is the case of comparable company approach. Now, what are the steps to be applied when we apply this comparable company approach? These are the steps to be applied when we are resorting to comparable company approach in calculating the value of the corporation. The first one is analyze the economy. The economy, first of all, we have to see the economy, what stage economy is passing through. Is it the boom period or depression period? Because it will have an impact on the price, on the value of the property. कोई भी प्रॉपर्टी का वैल्यू उसके इकोनॉमी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर इकोनॉमी बूम पीरियड में चल रही है, सैचुरेशन पीरियड में जा रही है, तो प्राइस भी ज्यादा मिलेगा. अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, in that case it will be difficult to get the price. So the price of goods will depend on the state of the economy. So first of all, in comparing companies, you have to see what is the state of economy. Second, state of the industry. Analyze the industry, complete industry. Example, this real estate industry. In real estate industry, we will see what is the price going on in real estate. Accordingly, we can find out the value of the flat or apartment. Similar is the case in companies also. We'll see what is the nature of the industry and what price the other firms are being fetched. Analyze the subject company. Analyze the subject company. First of all, जो कंपनी का हमको वैल्यू मालूम करना है, वो कंपनी को सब्जेक्ट कंपनी कहेंगे, और वो कंपनी के फीचर्स मालूम करना, कंपनी के एसेट्स कितने, कंपनी के लायबिलिटीज कितनी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपनी का मार्केट शेयर कितना है. वी हैव टू एनालाइज ऑल द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सब्जेक्ट कंपनी. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द कंपेरेबल कंपनीज. एक बार सब्जेक्ट कंपनी के बारे में डिस्कस कर लिए, स्टडी कर लिए, देन वी हैव टू स्टडी द कंपेरेबल कंपनीज. इस जैसे कंपनी, अभी जो सब्जेक्ट कंपनी है, इसके वजह से दूसरे कंपनीज के बारे में स्टडी करेंगे. कौन से कंपनी इसी के तरह कंपनी है. सेलेक्ट द कंपेरेबल कंपनी. एनालाइज सब्जेक्ट एंड कंपेरेबल कंपनीज. अब दोनों कंपनीज को कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे. वी हैव टू कंपेयर द सब्जेक्ट कंपनी विद द कंपेरेबल कंपनीज एंड फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंसेस वी हैव. देन एनालाइज द मल्टीपल्स. एक बार अगर मालूम कर लिए, दोनों को स्टडी कर लिए, सब्जेक्ट कंपनी एज वेल एज कंपेरेबल कंपनीज, देन वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर ऑफ फैक्टर्स. कई फैक्टर्स के मल्टीपल्स कैलकुलेट करना, वो मल्टीपल्स को ड्राइवर्स कहते हैं. बाय कैलकुलेटिंग द ड्राइवर्स, वी अप्लाई दोस ड्राइवर्स टू द सब्जेक्ट कंपनी एंड वी कैन बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट कंपनी. So these are the value of the subject. These are the steps to be applied whenever we are applying comparable company approach. This is the first approach in order to calculate the value of the company. Now second approach we'll discuss, the last approach, discounted cash flow approach. Actually, this traditionally the adjusted book value approach and comparable company approach was the two approaches which are commonly used in order to calculate the value of the company. Traditionally, पुराने ज़माने में दो मेथड यूज करते थे. एक तो एडजस्टेड बुक वैल्यू मेथड और दूसरा जो है कंपेरेबल कंपनी मेथड. Traditionally, these are the two methods which are applied to calculate the value of the company. But later on, बाद में, particularly after 1990s, discounted cash flow approach was regarded as the best approach to find out the value of the company, because conceptually it is much superior. This discounted cash flow technique approach is conceptually more superior than comparable company approach. The comparable company approach will not give the accurate value of the company.
So accuracy will increase. The correct value we can get by applying discounted cash flow approach. So this discounted cash flow approach has been endorsed and accepted by many consultancy organizations. Now valuing the company by applying discounted cash flow approach is very much similar to find out the present value of a capital project. एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ ए कैपिटल प्रोजेक्ट. एक कैपिटल प्रोजेक्ट है, वो कैपिटल प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के लिए वी हैव कैलकुलेटेड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज. तो जैसा कैपिटल बजटिंग प्रपोजल को इवैल्यूएट करते हैं, उसी तरह कंपनी को भी उसी तरह इवैल्यूएट करेंगे. कैपिटल प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के वैसा ही कंपनी को भी उसी तरह इवैल्यूएट करेंगे बाय कैलकुलेटिंग द present value of future cash flows. But the differences between capital project and company valuation is, in capital project the life is certain, finite. जो कैपिटल प्रोजेक्ट को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं उसकी लाइफ फाइनाइट है. एग्जांपल, एक मशीन खरीदने वाले हैं, अब मशीन का फ्यूचर कैश इनफ्लोज मालूम कर रहे हैं, तो पहले ये मालूम करेंगे कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन. द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years. आफ्टर 10 years वी कैन गेट a scrap value of ₹20,000. तो वी आर हैविंग ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दैट द लाइफ इज फाइनाइट 10 years, और 10 साल के बाद सैल्वेज आएगा एक 20,000. On that basis we are calculating the present value of all future cash inflows. Whereas in case of a firm, organization, company, it will not have a finite life. It will have an infinite life. कब तक जाएंगी, कितने साल चलेंगी कंपनी, कोई गारंटी नहीं है. फ्यूचर में कभी तक भी जा सकती हो, 100 years भी जा सकती है. There is no limit. या 10 years भी जा सकती है. तो this is the problem between evaluating a capital project and evaluating a company. Secondly, normally in a capital project, the investment is made only once. Investment, cash outflow एक ही बार होता है, बाद में सिर्फ cash inflows ही होती हैं. लेकिन in a company, the investment will be made from time to time. इन्वेस्टमेंट तो कई टाइम पे, हर जब भी 1-2-4 साल में एक मशीन खरीदना है, मशीन खरीदेंगे, कोई प्रोजेक्ट डालना है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है, तो कैश आउटफ्लोज भी होगा, कैश इनफ्लोज भी होगा इन केस ऑफ कंपनी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनालाइजिंग ए कैपिटल प्रोजेक्ट एंड एनालाइजिंग ए कंपनी. सो analyzing a company, calculating the present value of future cash inflows is a daunting task, is a very difficult task in case of a company. So how to calculate the value of the firm? We calculate the present value of cash flow in an explicit forecast period. Explicit forecast period plus present value of cash flow after explicit forecast period. तो दो टर्म्स लेंगे. एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड तक कैश फ्लो क्या होगा और एक्सप्लिसिट पीरियड के बाद फोरकास्टेड कैश फ्लो क्या होगा. ये दोनों कैश फ्लोस को ऐड कर दिए तो हमको वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा. तो व्हाट इज दिस एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड? द पीरियड ड्यूरिंग विच वी कैन बी एबल टू एक्सपेक्ट सम ग्रोथ इन द फर्म, सम इंक्रीमेंट इन द फर्म, कैश फ्लोस. तो हम कैश फ्लोस हमको मालूम करना पड़ेगा ड्यूरिंग दिस एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड. एग्जांपल, एक कंपनी है, अब कंपनी ये एस्टिमेट कर रही है कि हमारा एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड 10 years तक रहेगा, यानी बता रही है कि 10 years तक हमारा कैश फ्लो ग्रो होते रहेगा. वी कैन बी एबल टू एक्सपेक्ट हाउ मच कैश फ्लोज वी कैन गेट ड्यूरिंग द 10 years. दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड. वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड प्लस what is the PV of cash flow out after explicit forecast period. जब एक बार या 10 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा तब स्टेडी ग्रोथ पीरियड होगा. जब ग्रोथ नहीं होगा, कांस्टेंट ग्रोथ होगा, तब ये कांस्टेंट ग्रोथ पीरियड में उसका कैश फ्लो क्या होगा. तो वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ड्यूरिंग द एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर दिस एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड. ये दोनों कैश फ्लोस को ऐड करने पर हमको आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म. दिस इज द मेथड
This is a method applied to calculate the value of the firm according to discounted cash flow approach. तो इसमें steps क्या है? What are the steps to be applied in discounted cash flow approach? First of all, forecast the cash flow during the explicit forecast period. जो हमारा explicit forecast period है उसमें cash flow क्या होगा, हर साल कितना कितना मिलेगा, ये फर्स्ट हो. सेकेंड, एस्टैब्लिश अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हमको डिस्काउंटिंग रेट चाहिए. ये फ्यूचर कैश फ्लोस फ्यूचर में आएंगे, लेकिन हमको उसका प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना है. टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो वी नीड द discount rate, and the discount rate is the cost of capital. Thirdly, determine the continuing value at the end of the explicit forecast period. जब explicit forecast period हो जाएगा तो उसके बाद उसका continuing value क्या होगा, how much cash flow we can expect, right? Last one, calculate the value of the firm by adding the cash flow during expected forecast period and after explicit forecast period. दोनों कैश फ्लोस को ऐड करके वैल्यू ऑफ द फर्म मालूम करेंगे, देन वी कैन इंटरप्रेट द वैल्यू. सो दिस इज द थ्योरी रिगार्डिंग कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कंपनी. Two approaches we have discussed.